Good afternoon, everyone. Hope all of you are doing well. Today, in this particular session, we will be discussing on a very interesting topic for investors. I am Anik Mitra. I am a SEBI registered investment advisor with 17 plus years of experience in equity research with large corporate. Today also I am associated with the industry with some institutions, and along with that I am taking care of the investment of some HNI and some ultra HNI people. So interesting topic is everyone wants to make money, right? So everyone wants to make quick money, but often people are not aware of their own risk appetite. So this is something which must be taken care of. And if you are able to manage your risk, if you understand your own risk appetite, then this portfolio can be a very good choice for you. This is a portfolio called MicroCap and penny stock portfolio. पेनी स्टॉक्स में सबको इंटरेस्ट है. बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं पेनी स्टॉक्स, क्योंकि पेनी स्टॉक इज समथिंग विच कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न, वेरी हैंडसम रिटर्न. मनी कैन बी मल्टीप्लाइड, योर इन्वेस्टमेंट कैन बी मल्टीप्लाइड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? मगर द रिस्क अटैचमेंट मीन्स विच कैन गो upward, that can go downward in the similar way as well. So this is something you have to be very careful. How good is your risk appetite is, so that is something you have to take care of. बहुत लोग हैं जिसको वॉलेटिलिटी झेलना नहीं आता है. मतलब इफ प्राइस गोज डाउन 10%, देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड. देन हाउ कैन यू प्लान फॉर अ 200% रिटर्न from your portfolio? So for that, a good understanding, clear-cut understanding of the risk and own risk appetite is very much needed, where I am emphasizing before starting and discussing on this particular topic, small micro cap and penny stock investing. So micro cap and penny stock, for that let me clarify very clearly that micro cap means as per the earlier guideline of SEBI, below 1000 crore is all micro cap. Now अभी तो definition थोड़ा change हो गया है, in the sense like it based on the top 100 companies market cap. Means top 100 companies का market cap अगर बढ़ता रहता है तो your large cap जो domain है इसका भी जो लार्ज कैप कंपनीज है इसका भी रेंज ऊपर जाता रहता है. What I mean to say, earlier any stock above 20,000 used to be large cap. Now it's not at all. Now a stock with 30,000 crore, even 40,000 crore is also a mid cap stock. So it differs from time to time based on the guideline of the regulator, but for our convenience, if we take earlier definition as the correct one, or let's say earlier definition, if we follow the earlier definition, in that case any stock below 1000 crore of market cap will be micro cap companies. And penny stock जो आपको समझ में आता है, आप कोई बोलता है any stock below 30 rupees, कोई बोलता है below 50 rupees, कोई बोलता है 10-20 का ही होता है then penny stock. तो it hardly matters, but very important is all these companies like below 50 rupees, 60 rupees आप पकड़ सकते हो, those are all penny stock, or any stock below 1000 crore of market cap are all micro cap. So there are large potential from this particular domain to grow. और जब होता है ना मतलब a stock which has a small market cap, then it can move quite fast. जो stock जिसका प्राइस कम है वो बहुत जल्दी मूव कर सकता है. But simultaneously, one thing you have to keep in mind, there must be something, some trigger which can move the stock up. Correct? तो ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा बहुत स्टॉक है जो those stocks are micro cap, those stocks are penny stock for years. For 20 years, the stocks are lingering around 10 rupees, 20 rupees, never moved up, because that means that criteria, that
what should I say, like that element is not there in in that particular stock. So that is not our motive. Our motive is to find out good businesses. Our first motive is to find out good businesses where opportunities are there, and most of the opportunities, believe me, most of the opportunities come from the sector, from the industry itself. There are opportunity, आप बोलोगे, आप देखोगे न्यू एज कंपनीज, लोग बोल रहे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, लोग बोल रहे ड्रोन कंपनीज, ईवी बैटरीज, ऑल दीज आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इंडिया. सेमीकंडक्टर, इट्स अ न्यू एवेन्यू. लोग बोल रहे हैं कि ऑल दीज न्यू एज कंपनीज विल ग्रो मल्टीफोल्ड. हो सकता है, possibilities are there, high possibilities are there. Doesn't matter whether they are large cap, mid cap, small cap, micro cap or penny stock. मगर अगर वो अपॉर्चुनिटी अगर आपका वो माइक्रो कैप डोमेन में मिल गया, वैसा कोई कंपनी जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है, वैसा कोई स्टॉक अगर आपको माइक्रो कैप डोमेन में मिल गया, वैसा कोई स्टॉक अगर आपको पेनी स्टॉक कैटेगरी में मिल गया, 50 रुपीज़ से नीचे भी नीचे है, 30 40 50 रुपीज़ के जोन में है, तो दैट will be an additional opportunity for you. So first top target is to find out a good business, and if the opportunity is there in the sector, then that is an organic growth opportunity for the stock, for the sector, और वो natural growth हो जाएगा. I will give you lots of examples today. So I have identified many such stocks in my last 2-3 years. So I will give you a few examples, but before start, let me give you one declaration. I do not have any buy, sell, hold recommendation in the stocks which I will be discussing today. Those are all old identifications and performed quite a lot. So today those are not any fresh recommendation. Those are not buy, sell, hold recommendation today, but those are eye openers. How a good stock can be identified. Wherever there are opportunities, that opportunity must be captured. Wherever there are opportunity to grow multifold, that opportunity must be captured. अब वो large cap में भी हो सकता है, mid cap में भी हो सकता है, micro cap में भी हो सकता है. Now this is our strength, that being an analyst, what we do, we keep on searching those opportunities, try to figure it out whether that particular opportunity lies in the micro cap domain, in the penny stock category. If any stock comes into that per se, that category, then means that opportunity fit to that particular category, then we take that particular stock. So that is the way how analysts work in the institution. Again, I'm saying, like, all of my thought processes are based on the way how institutional research picks stock and build their portfolio. And on this regard, let me tell you, I have written many research reports for the institution, and many of my research reports are available in the Bloomberg as well. So I have covered all sectors. So sector specific research is something different, and when a sector specific identification fits into the micro cap category or penny stock category, then it's a big opportunity for an investor to opt that particular stock in the portfolio to avail the opportunity of the sector. Now let me give you one example which I have identified the stock in June 23. Again, I'm saying, please don't consider it any buy, sell, hold recommendation. If you have any personal choice of any of the stock which I will be discussing today, you check with your registered advisor. The stock name is BPL. याद है आपको, बिलीव इन द बेस्ट, वो 1990s वाला बिलीव इन द बेस्ट बीपीएल. दैट कंपनी, दैट ब्रांड वाज फिनिश्ड. जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ एकदम मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हुआ, उस दौरान बीपीएल वाज फिनिश्ड. आजकल क्या करता है बीपीएल? लास्ट 1 year back I have identified this stock around 58 rupees. अभी like it touched 130 rupees. So ये जो BPL का आज का बिजनेस है, जब हम आइडेंटिफाई किया तब का बिजनेस है. दे वेर इनटू द EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. दे वेर इन द EMS business. They were basically in the
पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिकली बोलो तो दे वेर इन द पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो सिस्टम बनता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए, दैट इज बिल्ट ऑन अ बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। उसके अंदर आपका डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर जो लगाना है उसके अंदर कनेक्शन होता है, एंड दैट इज हाउ इवन चिप भी उसमें ही लगता है, और वैसे वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनता है। तो नेचुरली आपको मालूम है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जितना बढ़ेगा, consumer electronic space जितना बढ़ेगा, like opportunity will be more. But BPL was in this particular business, but that was not the trigger for BPL. तो ये बिजनेस में BPL पिछले 5 साल से है, 5 साल या मे बी इवन मोर देन दैट, मगर इसके कारण BPL में 5 साल में कभी ट्रिगर नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन अप इन द कंट्री क्वाइट अ लॉट, आगे चल के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, बट दैट वाज नॉट द ट्रिगर. What was the trigger in BPL? If you remember, if you following the news flows and all, you will get to know BPL was basically, the brand name was basically taken by Reliance Industries. किसके लिए? Reliance का जो स्टोर है उसमें Reliance is intended to sell some of the products like TV, right? जो टीवी बीपी आपका रिलायंस का है, विच होल्ड्स, अभी बोला जाता है अराउंड 2% का मार्केट शेयर रिलायंस के टीवी का है मार्केट में. तो वेरी स्मॉल बट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज इमेंस. एंड व्हेन द नेम कम्स रिलायंस, रिलायंस का जो अपना स्टोर है उसमें रिलायंस जो टीवी सेल करना चालू किया है, मतलब जब हम आइडेंटिफाई किया, देन द डील हैपेंड. रिलायंस हैज tied up with BPL for manufacturing that TV. BPL क्या करेगा? उसमें टेक्नोलॉजी देगा. रिलायंस को BPL का टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए. इतना मतलब बुद्धि का कमी नहीं पड़ा है मुकेश अंबानी को BPL से टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा. वो BPL जो खत्म हो चुका है. तो BPL में ट्रिगर कहाँ से? BPL में ट्रिगर यहाँ से कि रिलायंस बोला, आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग TVs in my own house with my own technology, and what I will be taking from you, that is the brand name. I'll be putting your brand name, I'll be using your brand name, and for that you will be getting a licensing fees. That was the lifeline for BPL, क्योंकि उसका EMS business इतना भी अच्छा कुछ नहीं कर रहा था कि जिसके कारण उसमें कोई ट्रिगर हो सकता है. So that was the trigger. That is how within a very small span of time इसका प्राइस डबल हो गया. तो these are the triggers we have to identify. You have to identify for finding out good stocks. वो अपॉर्चुनिटी BPL के जगह अगर कोई दूसरा कोई कंपनी में आता जिसका 500 रुपीज़ का प्राइस है, दैट ऑल्सो वुड हैव पोजेस दैट पर्टिकुलर दैट सॉर्ट ऑफ ट्रिगर. मगर 500 का 1000 होना उतना मुश्किल, उतना आसान नहीं है जितना 50 का 100 होना. 50 का 100 उतना मतलब रिलेटिवली आसानी से हो जाता है, मगर 500 का 1000 उतना आसानी से नहीं हो सकता, राइट? तो ऑब्वियसली माइक्रो कैप एंड स्मॉल एंड पेनी स्टॉक ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो BPL को आप जैसे भी पकड़ो, आप माइक्रो कैप पकड़ो, स्मॉल कैप पकड़ो, सॉरी माइक्रो कैप पकड़ो या पेनी स्टॉक पकड़ो, जो भी पकड़ो, तो वो 55-58 जोन से ये जो एंटायर जर्नी 130 तक, इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स. सो another one example I will prefer to give in this particular platform. One company I have identified in April 2021. The stock name is Finotex Chemical. Finotex or Finotex, जो भी आप बोलो. Finotex Chemical. When I identified, I clearly remember the stock price was 68. Identified मतलब क्या है कि हम identify कर घर में रख लिया, ऐसा नहीं है. I am well connected to the institutions and keep on sharing my reports, research reports and all to the institution. So I identified this particular stock, Finotex Chemical, at 68 rupees in April 2021, long back, 3 साल पहले. तो what is the price now Finotex? 68 का अभी 400 rupees है, correct? तो what was the trigger in Finotex? क्यों हम identify किया था? Finotex is basically in the dye, like is a dye company. They are manufacturing dyes. तो डाई कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि 60 का 400 हो गया? देयर आर लॉट मोर डाई कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. उसका
प्राइस एप्रिसिएशन छोड़ दूँ, वो सब 30% 40% डाउन है। 1 साल पहले 2 साल पहले जो प्राइस था उससे अभी देखोगे तो उससे आपका तो 30-40% डाउन मिलेगा। क्यों? तो इसमें क्या हो गया अचानक फाइनोटेक्स में? तो वाई आई हैव आइडेंटिफाइड this particular stock, let me tell you the trigger. The trigger was this company was offering customized solution. इसका एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटिल है और उसको वो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। तो कस्टमाइज सॉल्यूशन मतलब कंपनी का उसके कस्टमर का रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बाकी के तरह प्रोटोटाइप डाइज वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। दे वर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर टेक्सटाइल कंपनीज हु आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सॉल्यूशन दे रहा था। So that was the big trigger for Finotex, and that made this 68 rupees to 400 rupees. So these are the opportunities you have to identify. Once you will be able to identify, then you can ride these rallies, right? So in between, let me tell you, if you are really interested to avail this kind of portfolio, to purchase this kind of portfolio, you can join TradeBox Live. You can access the TradeBox Live website, and there you will be getting my details, my portfolio, everything. I'm offering multiple portfolios in this particular platform. Let's come back. Whatever I'm sharing with you today, those are food for thought. Those are food for thought for your investment decisions. आपको खुद को अगर डिसीजन लेना है कौन सा स्टॉक में, माइक्रो कैप्स, पेनी स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको मिलेगा, हम आपको 2 स्टॉक आज बता देगा। हाँ, तो क्या फायदा होगा कि नेक्स्ट डे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर स्टॉक्स। तो देयर आर 2 ऑप्शन, लाइक आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। यू स्टार्ट हंटिंग इन योर वे नंबर, एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको काफी मतलब यू हैव टू रीड क्वाइट अ लॉट. दिस इज वन. एल्स यू कैन subscribe my portfolio in the tradeboxlive.com. So anyways, let's come back. I'm sharing another one very beautiful idea. The stock name is Orient Ceratec Limited. This is a stock I have identified in April 2024. करीब 30 to 33 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक हम आइडेंटिफाई किया था. क्यों किया था? लेट मी टेल यू. दिस स्टॉक इज बेसिकली आपको मालूम है रिफ्रैक्टोरीज. व्हाट इज रिफ्रैक्टोरी? तो रिफ्रैक्टोरी इज अ मटेरियल विच इज वेरी वेरी क्या बोलेगा कि हीट रेजिस्टेंट. तो जब आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर मोस्टली ब्लास्ट फार्नेस. चाहे वो ब्लास्ट फार्नेस हो या आर्क फार्नेस हो, जो भी हो, इलेक्ट्रिक आर्क फार्नेस हो सकता है, ऑक्सीजन फार्नेस हो सकता है, वो तो जो भी है, मगर आपको हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है. और बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होने के कारण वो जो फार्नेस है, चाहे वो जिस टाइप का ही फार्नेस है, उसके अंदर का जो मटेरियल है दैट वुड गेट डिस्टॉर्टेड. मतलब उसको एक स्पेशल कैपेसिटी होना चाहिए सो दैट इट कैन हीट, इट कैन मतलब रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर हीट. उसको वो टॉलरेंट हो सके वैसा 1500-1600 डिग्री सेल्सियस झेलने के लिए. एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस 1500-1600 सेल्सियस डेज आफ्टर डेज. तो नेचुरली इसके कारण वो होना चाहिए. जस्ट अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी. So I'm sorry. So this 1500-1600 डिग्री सेल्सियस झेलने के लिए कुछ ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए who can afford to who is tolerant to that particular heat. तो that heat resistant material is refractories. तो नेचुरली आपको वैसा रिफ्रैक्टरी मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा स्टील मैन्युफैक्चरिंग में. नाउ गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप in the steel India steel mission में गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप an initiative to manufacture 300 million tons of steel in every year मतलब going forward by 2030. क्यों? क्योंकि to support our infrastructure drive. आपको मालूम है गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 1 लाख करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो पिछले बजट में हुआ था, लास्ट बजट में हुआ था. तो उसके बाद गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली इन्फ्यूजिंग और एलोकेटिंग मनी
for infrastructure drive in the country and everything is going absolutely in line. तो naturally आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है कंट्री में तो व्हाट विल हैपन, स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा. तो स्टील का डिमांड अगर बढ़ता है क्योंकि स्टील का एक मेजर कंजम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होता है, तो स्टील कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो इंडिया विल हैव टू, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड. लेट मी टेल यू, जो टू बिग मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, वन इज चाइना एंड अदर वन इज इंडिया. तो इफ इंडिया इज मेनली कंज्यूमिंग इट्स ओन स्टील, थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी होता है, कुछ डिफरेंट वैल्यू एडेड स्टील इंपोर्ट भी होता है, बट डोंट गो आफ्टर दैट. तो इंडिया को अगर to run the make in India successfully, for steel manufacturing you have to grow your capacity, you have to increase your capacity to cater that increasing demand from the infrastructure drive. So for that government has taken the steel mission where 300 million tons of steel will be required by 2030. So government there is a push for building the capacity of 300 million tons of steel capacities in the country. अब बात है कि स्टील आप बोल रहे हो रिफ्रैक्टरी स्टील, तो एक कोरिलेशन तो आपको समझ में आ रहा है. व्हेन स्टील मैन्युफैक्चरिंग विल गो अप obviously simultaneously your refractories demand also will go up. एक इक्वेशन बताता है, अगर for 1 million ton of steel manufacturing you need 12 kg, around 12 to 13 kg or 12 to 14 kg of steel for one metric ton. I'm sorry, for one metric ton मतलब 1000 kg of steel manufacturing के लिए आपको 12 to 14 kg of refractories का ज़रूरत पड़ता है. दिस इज द इक्वेशन. अब उस हिसाब से आप पकड़ लो कि करीब 15 अभी मतलब रिफ्रैक्टरी जो मार्केट साइज है इंडिया, दैट इज अराउंड 15,000 करोड़. दैट मार्केट इज गोइंग टू बी 3 मिलियन टन बाई 2030. तो 300 मिलियन टन के साथ 300 मिलियन टन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बाई 2030 दिस इंडस्ट्री ऑयल विल बी 3 मिलियन टन. So naturally there is a huge opportunity, and Orient Ceratic, I was referring Orient Ceratic, this particular stock, this particular company is a refractory manufacturer. There are other companies as well in the refractory manufacturing, those are big companies like आप बोलो कि MHI Magnesita, that is a big company, right, in this particular domain. Other companies भी है जैसे और एक कंपनी IFGL Refractories, they are also catering this particular refractory segment. They are also a big supplier of refractories in India. तो वो तो अलग डोमेन में हो गया. वैसा एक कंपनी ओरिएंट सेराटिक whose valuation was very very favorable in 2023. तो I have identified this particular stock. It had a fabulous performance. 32 का we have seen till 71-72 rupees वो टच करके आया है. तो identifying the story, or let's say finding out the story is very important. That is needed first, and afterwards you have to find out the stock. Story ये है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ के साथ रिफ्रैक्टरीज का ग्रोथ, दैट इज द स्टोरी. अब यू हैव टू बाई द स्टोरी. ये स्टोरी, दैट स्टोरी फिट्स इन द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक, सारे डोमेन में. अगर स्टॉक आपका है, इफ देयर इज अ स्टॉक अवेलेबल हु कैन अवेल दिस जर्नी, राइड दिस जर्नी, तो वैसा कोई स्टॉक अगर आपको माइक्रो कैप सेगमेंट में है, पेनी स्टॉक सेगमेंट में है, देन इट कैन बी अ गुड बेट फॉर यू. मगर साइमल्टेनियसली वन थिंग, यू कैन नॉट take position in a one particular stock and can forget. It's not possible. Market is very very dynamic. आपको क्या करना पड़ेगा? You have to keep a close track. क्या चल रहा है? Whether the management is performing in line with whatever the opportunity is or whatever the management is guiding for. तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा. अब क्या होता है कि बहुत टाइम स्पेशली इस पेनी स्टॉक माइक्रो कैप डोमेन में आपको 30, 40, 50% स्टॉक ऐसा मिलेगा जहाँ पे मैनेजमेंट का एक्सेस नहीं मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है. ठीक है, तो इन दैट केस इट्स नॉट दैट वी डू नॉट रिकमेंड. येस वी कैन रिकमेंड, बट येस वी टेक
clues for various companies, various peer companies from that particular domain. So these are the opportunities one must avail, and for that, for identify this type of opportunities, आपको वो स्टोरी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो अपॉर्चुनिटी. दिस अपॉर्चुनिटी आर मोस्टली लाइज इन द सेक्टर. ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगा. और एक कंपनी के बारे में बोलेगा आपको, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग. इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, आई आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक एट 34 रुपीज़. अभी प्राइस क्या है? अभी प्राइस है आपका 300 के ऊपर है. आई थिंक इट्स 300. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक. Sorry, currently the stock price is 230 rupees. I have identified this particular stock at 34 rupees, I remember. I presented this electro steel casting, my identification, to the industry, but industry rejected this particular stock. Why? Because of their bad, poor corporate governance. इसके history काफ़ी ख़राब है. मतलब historically they have done lots of here and there, and that is why it was rejected. Now everyone is in this particular, after this particular stock. जब वो 30 का 200 हो गया, then institution started jumping into the stock. अब उसको इसमें क्रीम दिख रहा है. हाँ, अब true, corporate governance is a very big thing. I will also prefer to let an opportunity go. मुझे वो स्टॉक लेना नहीं है, वो 10 का 10,000 हो जाए फिर भी टच नहीं करना है, इफ देयर इज एन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू. तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, we were like, why I identified this particular stock, because of the like future of the DI pipes. जो जब हम आइडेंटिफाई किया था तब this particular stock, it was long back, I think in 2021 if I am not wrong. तो ये इस पर्टिकुलर कंपनी क्या करता है, दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग DI पाइप्स. ठीक है, एंड अदर टाइप्स ऑफ स्टील पाइप्स एज वेल. जिसका कंजम्पशन कहाँ पे, जिसका कंजम्पशन है वाटर मिशन में. जल जीवन मिशन चल रहा था, उसके बाद लास्ट 2 साल में इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है. तो जल जीवन मिशन एडप्ट्स दिस DI पाइप्स, मगर इसका और एक मेजर एरिया है, दैट इज़ द ऑयल एंड गैस सेक्टर. अब आपको दिख रहा है ना, काफ़ी काम चल रहा है ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में. आपका जो क्या बोलता है, एक तो आपका जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेक इंडियाज हाइड्रोकार्बन कैपेसिटी, इंक्रीज इट्स हाइड्रोकार्बन कैपेसिटी, वो तो एक है. मगर उसके साथ ये जो पाइप क्या बोलते हैं CGD सेक्टर जो है, दैट इज़ द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, दैट इज़ प्रोलिफरिंग अ लॉट. ये दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिलेटेड कंपनीज, जो हम पिछले 2-3 साल से कई बार बोल चुका है. तो दिस पर्टिकुलर सेक्टर, दिस फॉर आपका जो घर में जो पाइप्ड गैस आएगा, PNG पाइप नेचुरल गैस, वो पाइप नेचुरल गैस वो घर में भी आएगा, वो आपका इंडस्ट्री भी वो पाइप नेचुरल गैस ही कंज्यूम करता है, क्योंकि पाइप नेचुरल गैस इज प्रेफर्ड ओवर LPG, क्योंकि LPG इज मोस्टली इम्पोर्टेड, इट इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड. और पाइप नेचुरल गैस का करीब 70-75% इज मेड इन इंडिया, एक्सप्लोर्ड इन इंडिया. तो हियर इज अ बिग डिफरेंस इन द कॉस्ट. ठीक है, तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो eager to promote this pipe natural gas in the country, or CGD companies are like playing the significant role here. तो गवर्नमेंट आपको मालूम है कई सारा GS मतलब जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया है डिफरेंट जोन्स को. महाराष्ट्र इज completely, there are 5, I think 3, 4, 5 zones in Maharashtra. Delhi and Noida area is also coming in under this particular segment, जो different companies cater कर रहे हैं. जैसे आपको इंद्रप्रस्थ गैस, यहाँ पे महानगर गैस मुंबई में मैक्सिमम, महाराष्ट्र में cater कर रहा है. इंद्रप्रस्थ गैस इज डूइंग इन दिल्ली बेल्ट. तो दीज आर बिग अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो नेचुरली
स्टील पाइप्स का डिमांड, इसमें DI पाइप, स्टील पाइप्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, सीमलेस पाइप्स का डिमांड बढ़ता है। तो ये सारा मतलब दिस कंपनी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इज मेनली अ DI पाइप मैन्युफैक्चरर। अब क्या हुआ कि अब प्राइस बढ़ चुका है, we are already 2 years 3 years in this particular growth of the sector, जो पिछले 2-3 साल से इसका ग्रोथ स्टोरी चल रहा है। नाउ दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। अगर आप ये फ्रेश अगर सोचते हो कि DI पाइप्स, तो DI पाइप्स और सीमलेस पाइप्स, दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। हम नहीं बोल रहे इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसमें री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज है, मगर फ्रेश नहीं है। जहां पे 30 का 300 होगा वो चीज नहीं है इसमें अभी। अब हो सकता है प्राइस मैनिपुलेशन होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, कोई फ्रेश अंडर वैल्यूड हो गया उसका, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज नॉट इन माई, मतलब मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। मगर देन इट वॉज समथिंग विच वॉज एट द नेसेंट स्टेज, जो लोगों को समझ में ही नहीं आया। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू कैप्चर। वही हम बोलते हैं कुछ 100 का 200 हो गया, अब उसमें जाके कूद जाओ, दैट मस्ट नॉट बी द अप्रोच। अप्रोच शुड बी आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक एट द लोएस्ट लेवल। अगर उसके बाद वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकता है तो उसमें आपका रिस्क रिलेटिवली कम है। मगर 200 का अगर 200 में जाके वो सस्टेनेबल नहीं होता है ड्यू टू XYZ रीजन, देन योर रिस्क अटैचमेंट इज क्वाइट हाई, मच हायर। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ कॉल। तो वैसा बहुत सारा कंपनीज है जो वो छोटा कंपनी बहुत बड़ा हुआ है, छोटा कंपनी बहुत बड़ा नहीं भी होता है। अगर एक ट्रिगर के कारण वो 2x रिटर्न देता भी है, ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जो 2x हुआ है कम समय में, बहुत कम समय में। सो मनी गॉट डबल्ड, इन्वेस्टमेंट गॉट डबल्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो कुछ हुआ है कि इस डोमेन में आपको मल्टी बैगर भी मिलेगा, इस डोमेन में आपको 2x काइंड ऑफ स्टॉक्स भी मिलेगा। और वट एवर इट इज, लाइक दीज अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी कैप्चर्ड, मस्ट बी आइडेंटिफाइड, मगर पैरेलली आपका रिस्क एपेटाइट भी ध्यान में रखिए। और एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा, दैट स्टॉक इज कॉल्ड, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज डेटामैटिक्स। अभी 600 के आसपास, 600 के ऊपर का प्राइस है, राइट। स्टॉक आई आइडेंटिफाइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन 110 रुपीज। अब बोलोगे 100 रुपीज का 600 रुपीज का जर्नी, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक? नाउ लेट मी टेल यू, द कंपनी does digital content publishing for publishing houses on Amazon platform and various other platforms. They display product lines, product description, ebooks, etc. and इसमें they apply generative AI quite a lot, and that helps the company to grow quite a lot. तो दिस कंपनी इज completely, and खास तौर पे दिस कंपनी started in this way. Now they are in the bigger domain, they are doing everything, means the whatever the basic I said about this particular company, this was the fact in 2021 when I identified this particular stock. But afterwards the company has transformed and added up lot more opportunities, lot more segment in its portfolio, and now it's a very big company, one of the very prominent face of US. Most of the business of the company comes from US, like other IT companies, and the stock price has had a phenomenal run up also in this period of time. तो ऐसा स्टॉक्स भी होता है, और कुछ स्टॉक है जो उतना मतलब 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीबैगर टाइप का नहीं है, मगर ठीक है 2x भी अगर होता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड थिंग. लाइक one company I will be telling you, the stock name is Jumbo Bag. Jumbo Bag was basically a manufacturer of industrial bag, जो क्या करता है कि इन इंडिया क्या होता है कि इंडस्ट्री में लाइक फॉर transferring one particular let's say some of the raw material, or let's say some of the elements, components of the production houses are transported from one area to another area raw. मतलब बस उसको किसी बैग में डालना नहीं है, सीधा
ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, लेके चला गया, सीधा लेबर आया उसके कंधे में लेके चला गया. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फिजिबल इन यूएस एंड इन अदर कंट्रीज. तो उसमें क्या होता है कि बड़ा बैग्स आता है, वो बैग्स जिस टाइप का बैग्स आता है वो बैग्स अभी भी इंडियन इंडस्ट्री अडेप्ट किया नहीं है, फुल्ली अडेप्ट नहीं किया है. तो दैट बैग्स आर कॉल्ड जंबो बैग्स. These bags are very big in size and can put 50 kg 100 kg. तो इस साइज में आता है वो बैग. तो ये सब काम ऐसा बैग्स बनाता है जंबो बैग नाम का एक कंपनी. कुछ एक कंपनीज है जो बनाता है. आई आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक अराउंड 22 रुपीज़ एंड उसके बाद लाइक इट वाज इन May 23 एंड आफ्टरवर्ड्स इट हैड अ फिनोमिनल रन अप. वो 50 रुपीज़ टच करके आया. तो ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स हुआ नहीं है, मगर ठीक है 20 का अगर 50 भी होता है दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट वन. मतलब इट्स मोर देन 2x. सो 2x भी होता है. सो दिस जर्नी इज वेरी फैबुलस. यू नो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट मूव्स, इन्वेस्टमेंट गेट्स डबल्ड. मगर इसके पीछे प्रॉपर ट्रिगर होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली यू कैनॉट eliminate the risk element in any of this kind of investment. Means क्योंकि इसमें तो रिस्क होगा ही 100%. तो if you can identify stocks based on this type of new ideas, then you will be well off in the market. And I will be requesting you, if you people are really interested and unable to identify this type of opportunities, then I am there with my microcap and penny stock portfolio in the Tradebox Live website. You can catch me in Tradebox Live. You can subscribe my portfolio there. And let me tell you, whenever I recommend one particular stock, it's not I only recommend the stock. You will not get to know why I am recommending this particular stock. It's not at all. Whenever I recommend any stock, I give the simultaneous research report to my investors so that my investors should be aware of the rationale behind the investment, the valuation behind the investment. So everything remains in a complete research report. And many of my recommended stocks are like, what should I say, like इसमें क्या करता है हम, लाइक आई कीप ऑन बीइंग टच इन विद द मैनेजमेंट फॉर मेनी कंपनीज. सारा में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लाइक फॉर मेनी कंपनीज मैनेजमेंट इज नॉट एक्सेसिबल, मैनेजमेंट डज नॉट प्रेफर टू रेस्पॉन्ड. सो दोज आर अ फ्यू, बट मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक आई keep on speaking to the management. और बहुत समय क्या होता है कि we keep on speaking to the peer companies as well so that we get the real picture. क्योंकि management आपको रोजी पिक्चर दिखाएगा. If you would ask regarding your company, if I would ask regarding your company, you will show me रोजी पिक्चर. हाँ, मेरा तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ प्रेजेंट कर सकता है. some of the management are very मतलब very fair, मगर कुछ कंपनीज है ऐसा रोजी पिक्चर दिखाता है. आई हैव सीन दिस. सो जस्ट कैनॉट कीप माई सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड विद इन द मैनेजमेंट स्पीच ओनली. फर्स्टली आइडेंटिफाई द स्टॉक, देन try to find out the rationale, build the understanding, check with the management, check with the peer companies, and that is the approach, that is the way how I recommend the stock. And recommendation means recommendation हो गया बस भूल गया, वैसा नहीं है. Need to keep a close watch every quarter with each and every development. News flows आता रहता है continuous basis. Sometimes company specific, sometimes news flows are very sector specific or maybe government policy related declaration. So we keep on analyzing the impact of one particular news flow on that stock. This is one. Keep on tracking quarterly results and keep on deciding whether to continue holding, whether to get out of that particular investment. This approach is something which is followed in the industry. The same approach I follow for the institutions as well as for my investors. So, and along with that, what you will be getting? You will be getting a customized portfolio.
ऐसा नहीं है कि ठीक है आई हैव आइडेंटिफाइड वन स्टॉक 1 year back, stock price has been doubled, still I am holding. It does not mean that today if you join me I will recommend you the same stock. बिल्कुल नहीं. You will be getting a customized portfolio from me. तो आज अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करता है, डज नॉट मीन दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई विल गिव यू अ कंप्लीट पोर्टफोलियो. ओवर द पीरियड ऑफ time a portfolio will be built. First you will be getting obviously something, but going forward over the period of time your complete portfolio will be built, and that is my way of working, that is my style of working, and I feel this is the best way of working, so that it's not prototype, because market is dynamic, we can't be static, right? So if you feel this is your way of investment, you can invest in this particular stock, in this type of stocks, then please visit tradeboxlife.com, and you'll be getting me, you'll be finding me over there. I am Anik Mitra, a SEBI registered investment advisor, signing off today. Thank you for your valuable time, and keep on tracking Tradebox lives and me as well in next sessions. Thank you so much.